वेलकम टू पटनायक एजुकेशन। यहीटा तुम यही क्लासटा आम जो बायोलोजी 250 प्लस सिलेक्टेड एमसीक्यू गुड़ाक कवर करुचे तार यहाँ क्लास 2 बा पार्ट 2। तो क्लास टी स्टार्ट करवा। क्लास जो तुमको भल लगे लाइक शेयर एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो क्वेश्चन आरंभ करवा। फर्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन प्लांट रो को पार्टा रेस्पॉन्सिबल से दायित्वटा से बहन करें जाइलेम रूट स्टोमाटा बार्क। तार करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन सी स्टोमाटा। ओके, स्टोमाटा द्वारा लीफ जो स्टोमाटा थाए ता द्वारा आमर कौन ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रीज इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। तो तार ऑप्शन से कौन मैग्नीशियम फॉस्फोरस आयरन कैल्शियम। तो तार करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बा आर करेक्ट। को स्टेटमेंटा करेक्ट अछि? अमोनियम कंटेन्स फ्लूइड, अल्ट्रासाउंड स्कैन कैन डिटेक्ट द सेक्स ऑफ एन एम्ब्रियो। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो दीटा भितर को माने को स्टेटमेंटा करेक्ट अछि? तो फास्ट ही करेक्ट अच्छी। अल्ट्रासाउंड स्कैन कैन डिटेक्ट द सेक्स ऑफ एन एम्ब्रियो यहाँ तो स्कैन से कर। तो ऑप्शन 1 टा ठीक अच्छी, स्टेटमेंट 1 टा ठीक अच्छी। तो ऑप्शन ए हो 1 ओनली राइट हो। देन देखिए सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन डज किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। को मेथड रे आमे वाटर प्यूरिफिकेशन कले सेटा हमर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करि थाए। बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, यूवी रेडिएशन। तो 4 नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीपल सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वसा। एटा गोटे रोगर ना है डिजीज ना ए कौन होता है? डेभलप पैरालिसिस, सो पोअर रिफ्लेक्स, कैनॉट स्पीक प्रॉपर्ली, ईट वेरी लिटिल एंड फियर गेनिंग वेट। तार राइट आंसर हम ऑप्शन डी ईट वेरी लिटिल एंड फियर गेनिंग वेट। ओके, अल्प खाती बट तांकर फियर थाए गेनिंग वेट है। यार ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैट्स आर नीड फॉर मेटर। Fat helps the body to absorb calcium from food. Fats are required to repair damaged tissue. Body cannot release energy in fats as quickly as the energy in carbohydrates. तो कौटा आधर ठीक अच्छी 6 नंबर राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन ए 1 एवं 4 माने फैट्स आर नीडेड फॉर द फॉर्मिटर। देन 4 देछि बॉडी कैन नॉट रिलीज एनर्जी इन फैट्स एज क्विकली। तो ये दुटा ही करेक्ट अच्छी। ओके, फैट रिगार्डिंग स्टेटमेंट अच्छी। तो 1 एवं 4 हम राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन सैला। 7 नंबर क्वेश्चन की जावा। 7 नंबर क्वेश्चन देछि ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व meiotic cell division only, both meiotic and meiotic cell division only, then देछि amniotic cell division only। तो राइट आंसर कौन है? 7 नंबर ऑप्शन ए meiotic cell division only। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लिवर। कोटा गोटे फंक्शन नुह लिवर रो। कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजेन, देन देछि प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, destruction of dead and not red blood cells, absorption of food and excess water from the undigested food। तो 8 नंबर राइट आंसर कौन है? ऑप्शन डी absorption of food and देछि नॉट ए फंक्शन। ए तीनटा तो कौन लिवर फंक्शन अटंती। तो कौटा फंक्शन नुहे? ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन कौन देछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड। कौटा गोटे कोल्ड ब्लडेड एनिमल? डॉल्फिन, शार्क, व्हेल, porpoise। तो राइट आंसर हम 9 नंबर ऑप्शन बी शार्क। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोटा गोटे पार्ट नुहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो? फालोपियन ट्यूब, सर्विक्स, यूरेथ्रा, भाजिना। तो राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन सी यूरेथ्रा। ओके, यूरेथ्रा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे न थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय। लेप्रोसी क्या कारण होता है? तो राइट आंसर कौन है? ऑप्शन बी बैक्टीरिया कारण। नेक्स्ट व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। कोटा गोटे प्लांट हार्मोन? इंसुलिन, थायरोक्सिन,
जिबरलिन एस्ट्रोजेन तो राइट आंसर कौन है 12 नंबर ऑप्शन सी एगुड़ाक तो सब कौन आम मनीष पाखे पाऊना ये जो ऑप्शन 3टा देती तो प्लांट एंड हार्मोन पचार तो जिबरलिन हम राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देती व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल को सेलटा एब्सेंट थाए एनिमल सेल रे तो राइट आंसर कौन है सेल मेम्ब्रेन ऑप्शन ए हबार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के हम जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करबा देछि पीएच ऑफ आरबीसी इज लोअर ड्यू टू तो राइट आंसर कौन है ऑप्शन बी गिब्स डोनान इफेक्ट ओके पीएच ऑफ आरबीसी इज लोअर ड्यू टू गिब्स डोनान इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गिब्स डोनान इफेक्ट क्रिएट्स जो गिब्स का डोनान इफेक्ट एटा कौन क्रिएट करे तो राइट आंसर कौन है 26 नंबर ऑप्शन सी ऑस्मेटिक प्रेशर गिब्स डोनान इफेक्ट क्रिएट्स ऑस्मेटिक प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन transmembrane potential result due to transmembrane potential result due to कहा द्वारा आमर होइथे transmembrane potential then 87 नो राइट आंसर ऑप्शन ए डोनान इफेक्ट changed ion बा चार्ज्ड ion then देछि rate of diffusion of a substance depends on rate of diffusion of a substance depends on कहा पर डिपेंड करे rate of diffusion of a substance तो 88 रो राइट आंसर है ऑप्शन बी concentration gradient of solute नेक्स्ट क्वेश्चन की जबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि होमियोस्टेटिस मीन्स होमियोस्टेटिस रो माने कौन तो 89 रो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड होमियोस्टेटिस नेक्स्ट देछि डिफ्यूजन इज मोर रैपिड इन solid liquid gas mixture of liquid and gas राइट आंसर कौन है ऑप्शन सी गैस डिफ्यूजन मोर रैपिड कोथ रहता है बहुत शीघ्र गैस रे नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑस्मोसिस मोमेंट ऑफ डैश occurs through the semi permeable membrane solvent solute both A and B या all the above तो राइट आंसर हम 91 रो ऑप्शन ए solvent नेक्स्ट क्वेश्चन देछि viscosity of blood increase with rise in albumin globulin then देछि fibrinogen prothrombin तो राइट आंसर कौन है 92 रो ऑप्शन ए albumin नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि 93 osmotic pressure across the capillary wall is exerted by the right answer कौन है 93 रो ऑप्शन सी concentration of the molecule नेक्स्ट क्वेश्चन देछि effect of change of temperature on viscosity involves effect of change of temperature एटा कहा सहित इन्वॉल्व अछि increase in velocity decrease in viscosity no change both A and B तो 94 रो राइट आंसर हम ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन देछि पीएच मीन्स कौन 95 तो ऑप्शन बी हम कौन माइनस log 10 H प्लस एटा होछि पीएच रो मीन्स इंपोर्टेंट मन रखिबो एटा को नेक्स्ट क्वेश्चन देछि माइक्रोकाइटिक एनीमिया डेवलप्स इन 96 रो राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विटामिन B12 डेफिशिएंसी देन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी दीटा को एटा करे देन देछि एक्सट्रिंसिक सिस्टम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय फैक्टर 3 ऑप्शंस गुड़ा देछि तो 97 राइट आंसर कौन है ऑप्शन ए फैक्टर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा पूर्व यदि क्लास टी तुमको टिके भी भल लगुछि ताहले एबे ही क्लास को लाइक एवं सांग मानक सहित शेयर एवं हम चैनल को सब्सक्राइब करिनियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीकोगुलेंट तो कोडा नुहे देछि हेपारिन देन देछि प्रोटीन सी तो 98 रो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जोटा कि सॉरी ऑप्शन ए लिभि जाइछि तो 98 हम करबानी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए यूनिट मेम्ब्रेन इज अबाउट केते थाए तार थिकनेस टा केते थाए ए यूनिट मेम्ब्रेन रो तो राइट आंसर हबो ऑप्शन सी 75 to 100 नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द एंजाइम व्हिच ब्रेक अप स्टार्च इनटू सुगर आर कॉल्ड जो एंजाइम
कौन करे स्टार्च को सुगर रे परिणत कर दिए ताको कौन कह जाए तो यार राइट आंसर हम 72 ऑप्शन बी अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि apo enzyme is a protein carbohydrate vitamin or amino acid तो राइट आंसर हम 73 ऑप्शन ए apo enzyme हूँ गोटे प्रोटीन। coenzyme is always a protein often a metal always an inorganic compound often a vitamin तो राइट आंसर हम 74 ऑप्शन डी often a vitamin एटा हिजबा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि 75 नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर देयर सबस्ट्रेट्स बाय एडिंग सफिक्स एंजाइम रो ना हेथे कोन एडिंग सफिक्स कोन को सफिक्स ऐड हेथे तो राइट आंसर हम 75 रो ऑप्शन बी एज ओके एंजाइम लाइसोजाइम हम जेमती सब करचे लास्ट कोन आछि एएसई तो एज एंजाइम एग्जिस्ट इन द सेल आज enzyme exist in the cell as solid crystals colloid या none of the above तो right answer अब 76 option C colloid। an enzyme brings about 77 an enzyme brings about reduction in activation energy। next question which of the following statement is not correct कोटा correct नहीं देछि all enzymes are thermolable all enzymes are biocatalysts all enzymes are protein all proteins are enzyme not correct पचारची ओके तो ऑप्शन डी all proteins are enzyme एटा तो केबे हेई परिबनी तो ऑप्शन डी टा हबार करेक्ट आंसर ओके नॉट करेक्ट पचारची तो एटा करेक्ट नहीं एगुडा सब तीनटा को करेक्ट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देजी हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप हमरा ब्लड ग्रुप को किए डिस्कवर करले 79 तो राइट आंसर ऑप्शन डी सी लैंडस्टेनर हमारा लैंडस्टेनर ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करते एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड पी प्लेटेट्स आर तो 80 रो करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन सी हाइड्रोलिस। एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन क्या द्वारा परफॉर्म करा जाए तो 81 रो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। Bile reduce the surface tension and causes bile reduce the surface tension and causes तो 82 रो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन डी ऑल द अबव ओके emulsification of fat absorption of fat then digestion of fat तो ऑप्शन डी हिजवा राइट आंसर। डायलिसिस कॉजेस डायलिसिस कौन का तार कारण कौन कॉजेस बा कौन करे ता द्वारा डायलिसिस द्वारा तो 83 रो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ कॉलेट्स फ्रॉम क्रिस्टल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हेल्प्स इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा को माने कौन पाई सहाय्य करे हमको तो 84 रो राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ड्यूरिंग हाइपोक्सिया किडनी रिलीज हाइपोक्सिया समय रे किडनी कौन रिलीज करते हैं तो राइट आंसर हम ऑप्शन बी रेनल एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इंस्ट्रिक्ट फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय पेरिटल सेल ऑफ स्टमक। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी तो राइट आंसर कौन हम विटामिन B12 देछि फॉलिक एसिड देन आयरन 31 राइट आंसर हम ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देछि लार्जेस्ट WBC ओके व्हाइट ब्लड सेल इज पेरिफेरल ब्लड इज तो 32 रो राइट आंसर हम ऑप्शन सी मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा 33 क्वेश्चन की द प्रोसेस बाय व्हिच WBC squeeze through pores in capillary wall is तो को प्रोसेस रे एटा हेइ थे तो 33 रो राइट आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन डी diapedesis। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉलेस्ट ब्लड सेल रो ना कोन तो 34 रो राइट आंसर हबो ऑप्शन बी प्लेटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमनेस्ट एनीमिया इन इंडिया इज 35 रो राइट आंसर is ऑप्शन सी iron deficiency anemia। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म ER was coined by
ER से टर्मटा कहा द्वारा हेला द टर्म ER वाज कॉइन्ड बाय तो 36 रो राइट आंसर हे जबा ऑप्शन बी पोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जबा नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following organelle has a continuous connection with nuclear membrane? A Golgi apparatus, B lysosome, C RAR, D SER। तो 37 रो राइट आंसर हबा ऑप्शन सी is your right answer. Next question jiba in RER ribosomes are located on तो ribosomes कोड देखा जाए तो 38 रो राइट आंसर हबा ऑप्शन ए द cytoplasmic site. Next question which of the following statement were true regarding ER? 39 रो राइट आंसर है जिबा ऑप्शन डी सब जाक ही ठीक अछि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि which of the following statement are correct regarding Golgi apparatus? ओके कोडा करेक्ट अछि Golgi apparatus देछि कि sorting and packaging then देछि excitosis of melalin granules, excitosis of thyroxine hormone, all the above. The right answer habo option D all the above. The term Golgi apparatus was coined by Golgi apparatus किए कहथिले टर्म टाकू 41 रो राइट आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन ए कामिलो गोल्गी। then F0 ru F1 particles are located on 42 रो राइट आंसर हबो ऑप्शन बी इनर mitochondrial membrane। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा इन mitochondria crystate act as sites for the 43 रो राइट आंसर ऑप्शन डी oxidation reduction reaction। Mitochondrial inner membrane is rich with phospholipid तो 44 रो राइट आंसर कौन है ऑप्शन सी caridolipin। which of the following is not a function of mitochondria? कोडा गोटे फंक्शन नहीं तो 45 रो राइट आंसर कौन है ऑप्शन डी ग्लाइकोलिसिस आर एसोसिएटिव प्रोडक्शन एटा गोटे फंक्शन नुह कहार माइटोकॉन्ड्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया प्रथमे किए कहथिले टर्म टाकू तो आर राइट आंसर हबा 46 रो ऑप्शन बी बेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियस वाज फास्ट डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस फास्ट डिस्कवर्ड बाय कहा द्वारा हेतला 47 रो राइट आंसर हे जिवो रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कंटीन्यूअस कनेक्टेड विथ 48 रो राइट आंसर हबा ऑप्शन बी RER। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स डिपेंड्स ऑन 49 रो करेक्ट आंसर कोन हबा ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द DNA protein ratio in chromatin is the DNA protein ratio केते थाए chromatin रे 3:1 2:1 1:1 और 4:1 तो 50 रो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी 1:1। The function of nucleus is राइट आंसर कौन है राइबोसोमल सबयूनिट सिंथेसिस। The basic protein of the nucleus are option C both A and B। okay nucleohistones then nucleoproteins। Lysosomes are present in all except lysosome सबुथरे थाए कहा को छाड़ी तो 53 रो राइट आंसर ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is the function of lysosome? कोटा गोटे फंक्शन होची lysosome रो 54 रो राइट आंसर ऑप्शन डी all the above। ऑटोफैगी ऑटोलिसिस डाइजेशन सब जगह lysosome are involved in extracellular digestion intracellular digestion the right answer 55 रो कोन हबो both A and B। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा who identify lysosome की आइडेंटिफाई करले lysosome को 56 रो हबा कोन नोविकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि all the following has ribosomes एक्सपेक्ट सब पाखरे राइबोसोम अछि ऑप्शंस भितरु कहा को छाड़ी की तो 57 रो राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूक्लियस। इन 70s ribosomes A stand for S टा कौन पे लिखा है तो 58 रो राइट आंसर ऑप्शन सी सेप्टेबर्ग यूनिट। 80s ribosomes are found in तो राइट आंसर कौन है यूकैरियोट्स।
द सब यूनिट ऑफ ATS राइबोसोम्स इंक्लूड तो 60 रो करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन सी 40S एंड 60S। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए द सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम इंक्लूड आर राइट आंसर ऑप्शन सी 30S एंड 50S। 70S राइबोसोम occur in 62 रो राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोकैरियोट्स। राइबोसोम्स आर मेड ऑफ तो 63 रो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन बी RNA एंड प्रोटीन। The rough ear is specially well developed in cell actively engaged in 64 right answer of option A protein synthesis। Next question, the nucleus contains कौन chromosomes option C है जो right answer। plasma membrane is a selectively permeable most 67 देखिए मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोजिक मॉडल। तो कौन अच्छी ऑप्शन डी रे तो फ्लूइड मोजिक मॉडल ऑप्शन डी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन्स तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइबोसोम्स कंटेन maximum amount of steroids lipids RNA या DNA। तो 69 रो करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन सी RNA। which structure is present in animal cell but is absent from plant cell। कोटा का हमारा animal cell रे थाए but plant cell रे absent थाए। तो 70 रो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन ए centrioles। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमाउंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एन इंडिविजुअल। ओके अमाउंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ओके इंडिविजुअल ठारे केते थाए अप्रोक्सीमेटली केते थाए। तो 14 रो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन डी 80 ml kg बॉडी वेट। नॉर्मल ब्लड पीएच केते थाए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 7.4। हेमोट्रोसिट वैल्यू इज द रेशियो ऑफ the right answer होगा ऑप्शन सी RBC to plasma। the plasma represents -% of total blood volume। प्लाज्मा रे केते परसेंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम रे थाए केते परसेंट थाए तो राइट आंसर होगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन रेंजेस फ्रॉम तो राइट आंसर है जो ऑप्शन ए 2.2 रू 4.3 ग्राम परसेंटेज। which component of protein contribute to maximum percentage to total plasma। तो राइट आंसर कौन होगा 19 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्बुमिन। सीरम डज नॉट कंटेन 20 सीरम डज नॉट कंटेन कैल्शियम। कॉम्बिनेशन ऑफ हिम विथ O2 इज कॉल्ड 21 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सी हिमोग्लोबिन। ओके हिमोग्लोबिन सहित ऑक्सीजन द्वारा मिसिबा ऑक्सी हिमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा adult hemoglobin contains dash polypeptide chains। adult hemoglobin में कितना polypeptide chains थाए तो 22 रा राइट आंसर ऑप्शन बी 2 alpha 2 beta। each hemoglobin molecule carries dash number of O2 molecules। 23 रा राइट आंसर ऑप्शन डी 8 नेक्स्ट क्वेश्चन each gram percentage of hemoglobin when fully saturated can carry dash milliliter of O2। The right answer होगा ऑप्शन बी 3.14 milliliter। In sickle cell anemia, the defect lies in which polypeptide। The right answer होगा 25 रा ऑप्शन बी बीटा चेन। ओके अल्फा चेन बीटा चेन गामा चेन डेल्टा चेन देखी तो बीटा चेन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखी एवरेज मीन corpuscular diameter is dash एवरेज मीन corpuscular diameter तारा कितना होगा राइट आंसर 26 ऑप्शन बी 6.3। इंक्रीज इन RBC काउंट बियॉन्ड 10 million per CU/mm इज नोन एज 27 राइट आंसर ऑप्शन सी पॉलीसिथेमिया। ओके तो एपर्यंत जदि तुमको क्लास टी भल लगुच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि a group of plants and animals with similar traits of any rank is। तो तार ना कौन हम टैक्सन स्पेसीज जेनस ऑर्डर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टैक्सन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि which is less general in characters are compared to genus, family, division, class, species. Right answer होगा option D species. Next question की जीवा next question देछि what is the correct sequence आतरे कोड अछि डीटा ही अछि kingdom, phylum, then class, then order. तो option D होगा right answer. Next question जीवा next question देछि metabolism refers to मेटाबॉलिज्म कहले कौन बुझ तो राइट आंसर ऑप्शन डी गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हाट इज नोमेनकल्चर आमे काहू कहबा जेनस एंड स्पीसीज नेम्स आर रिटन इन इटालिक्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर माने जो तांगा ना जो नामकरण होय नोमेनक्लेचर जेनस और स्पीसीज रो नेम आर रिटन इन इटालिक्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हाट आर सेल कॉल्ड इफ दे आर अडॉप्टेड टू परफॉर्म ए सर्टन जॉब. तो राइट आंसर कौन ऑप्शन डी स्पेशलाइज्ड गोटे से कौन सर्टन जॉब करिया पई जो सेल को अडॉप्ट कराए थे तांको स्पेशलाइज्ड सेल बोली कहा जाए. व्हाट आर सेल प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस कॉल्ड ओके माइटोसिस कॉल्ड ताको कौन कहा जाए माइटोसिस जो गोटे सेल को डिवाइड करे दीटा को सेल रे डिवाइड करे डॉटर सेल रे तो ताको कौन कह जिवो डॉटर सेल. तो ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हाउ मेनी सेल डिवीजन अकर इन माइटोसिस रे केतरा सेल रो डिवीजन हेते गोटे रे. तो ऑप्शन बी होबा राइट आंसर. ओके माइटोसिस गोटे सेल को डिवीजन करे तो माइटोसिस का कह जे माइटोसिस इज ए प्रोसेस वेयर ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल. तो गोटे सेल को डिवीजन करी दीटा आइडेंटिकल डॉटर सेल आमे पाई थाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन ए सेल दैट हैज हाफ द यूजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड हैप्लोइड. एका नंबर ए हे जिबा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस. फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस कॉल्ड ता कौन कह जे 12 नंबर राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोफेज. तो कह प्रोफेज. व्हाट इज द टर्म फॉर व्हेन ए सेल डिवाइड्स गोटे सेल जो डिवाइड होय तो कौन कह जे. तो 13 नंबर राइट आंसर हम माइटोसिस. ओके ऑप्शन ए नहीं माइटोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम. तो राइट आंसर हम ऑप्शन ए हायर कंसंट्रेशन टू ए लोअर कंसंट्रेशन या आम डिफ्यूजन बोली कही था. नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि नेक्स्ट क्वेश्चन देछि स्मॉलर सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए इन ए बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स. तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन ए प्लाज्मिड्स. रूट हेयर सेल आर adapted to absorb water and mineral ions by. तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन डी having a large surface area. नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि रेस्पिरेशन इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया रिक्वायर्स व्हिच टू केमिकल्स. को दीटा केमिकल दरकार. तो कौन कौन दरकार ग्लूकोज और ऑक्सीजन. तो राइट आंसर हम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ओके बोथ ए एंड डी. ओके राइट आंसर हम बोथ ए एंड डी. इलेक्ट्रॉन microscopes are able to distinguish between 2 points just a few nanometers apart. This is called resolution. तो ऑप्शन बी है राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन के हम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन ए लिविंग सिस्टम फ्लो. तो राइट आंसर हम ऑप्शन बी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. कौन कह लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर 100% एफिशिएंट बिकॉज ऑफ. राइट आंसर कौन ऑप्शन बी एंट्रोपी. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स रो कैरेक्टरिस्टिक कौन दे प्रोड्यूस. ओके दे प्रोड्यूस. तो राइट आंसर हम दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड. ठीक अच्छे दे रिजेनेरेट यहाँ ठीक अच्छे दे रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली. से पचारची डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग कोटा गोटे लिविंग बीइंग रो गोटे कौन कैरेक्टरिस्टिक देछि. तो राइट आंसर हम 15 नंबर सी
एटा ही समस्त पाखे माने पाई पारू आमे जो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाखे जो दे रेस्पोंड टू एक्सटर्नल स्टिमुली एमिति भी हे पारे दे कैन नॉट डाइजेस्ट देयर फूड बट दे रेस्पोंड टू एक्सटर्नल स्टिमुली तो राइट आंसर हम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि स्पेसीज फाउंड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन आर कॉल्ड तो राइट आंसर हम कौन allopatric species। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज होमोनिम the right answer haba option A identical name of two different taxa। next question the biologically cohesive unit of taxa is option D species। okay the biologically cohesive unit of taxa is called species। next question की जिबा next question देछि the scientific name of mango the scientific name of mango आम मैंगो रो scientific आंबर scientific ना कौन तो राइट आंसर कौन हम मांगीफेरा इंडिका ओके मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निकोटोनिया इज ए जेनस तो ऑप्शन सी हबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि नेक्स्ट क्वेश्चन देछि नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द टर्म सेल wall is given by the term cell wall ए टर्म टाको किए कहितले तो राइट आंसर हो कोन रॉबर्ट हुके। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तापर क्वेश्चन देछि the cell is not applied for virus तो ऑप्शन 3 हबा राइट आंसर। the membrane around the vacuole is known as tronoplast। तापर क्वेश्चन कोन देछि देखिबा तापर क्वेश्चन देछि माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन ओके ऑप्शन 2 ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कोन सेलुलोज प्लांट कोथरे हमर मेनली हिते सेलुलोज तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हमर कते नंबर क्वेश्चन सइला एटा 5 नंबर क्वेश्चन सइला ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा ये जूम कर दबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि लाइसोसोम्स आर नोन एज सब्सिडाल बैग्स बिकॉज द राइट आंसर कौन हेबो हाइड्रोलैक्टिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन द properties of integral membrane proteins can be studied by the right answer about 8 number option 3 free fracture technique and electron microscopy। The fluidity of the plasma membrane increase with the right answer haba option 1 increase in unsaturated fatty acid in the membrane। next question देछि which among the following defines GPI anchored proteins the right answer haba option 2 peripheral proteins of the plasma membrane 10 number option 2। तापर 11 नंबर को जिबा 11 नंबर देछि the resting potential membrane is determined by तो 11 नंबर राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन 1 potassium ion gradient। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि the oxygen and carbon dioxide crosses the plasma membrane by the process of प्रोसेस टाको हमर कोन कहै जे तो राइट आंसर हबो ऑप्शन 3 पैसिव डिफ्यूजन। ए सेल विदाउट ए सेल वॉल गोटे सेल तार सेल वॉल ही नथबो त ए टर्म टाको हमर कोन कहै जे ए टर्म टाको हमर प्रोटोप्लास्ट ऑप्शन 2 प्रोटोप्लास्ट बोली कहै जे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देछि हेलो एंजाइम इज मेड ऑफ APO enzyme and coenzyme तो ऑप्शन बी हबो राइट आंसर। which of the following organelles is called suicidal bag ठीक पूर्व कले क्वेश्चन टा suicidal bag हमर कहा कहै जे लाइसोसोम। most abundant blood cell in the human body RBC ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा number of iron atoms in one hemoglobin molecule बर hemoglobin रे केतेटा हमर नंबर ऑफ आयरन एटम्स थाए तो 4 नंबर राइट आंसर ऑप्शन सी 4टा थाए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोएंजाइम कोटा गोटे कोएंजाइम नुहे तो राइट आंसर बा ऑप्शन डी MN++। एक्टिविटी ऑफ
allocentric enzyme are influenced by our answer is allocentric modulators. Option A. In competitive inhibition, inhibitors bears a close structural similarity with the right answer कौन है ऑप्शन डी substrate. Enzyme acts best at a particular temperature called से temperature टाको कौन कह जाए 8 नंबर राइट आंसर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन कह जाए ऑप्शन सी ऑप्टिमम टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि 9 नंबर. लॉक एंड के मॉडल इज आल्सो नोन एज लॉक आउ के मॉडल को आउ कौन मध्य कह जाए राइट आंसर कौन हेबो टेम्पलेट मॉडल ऑप्शन ए. व्हिच बॉन्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन तो राइट आंसर हेबो ऑप्शन सी डी सल्फाइड बॉन्ड्स अट्रैक्शन. Which of the following statement is incorrect? कोड़ा ठीक नहीं. Enzymes are protein in nature. Enzymes are colloidal in nature. Enzymes are thermobile. Enzymes are inorganic catalyst. तो नॉट करेक्ट पचारची राइट आंसर कौन हम एंजाइम्स आर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट एटा हमर करेक्ट नुहे आ तीनटा करेक्ट अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. एपियो एंजाइम्स dissociates from coenzymes due to the right answer कौन है changes in pH due to changes in pH. next question देखिबा. next question कौन देछि which of the following enzyme inhibition shows decreased km value तो right answer अब option A competitive inhibition. तो तुम मानकर क्लास टी जे सरुची आमे 250+ बायोलोजी रो एमसीक्यू गुड़ाक डिस्कसन कले. तो थ्योरी केबे अलग क्लास रे आमे डिस्कसन करबा एथरे केवल आमे क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन कले. ओके सब जगह सिलेक्टेड क्वेश्चन थिला. क्लास टी जदि तुमको भलो लागुची एबे ही लाइक शेयर एवं आम चैनल को सब्सक्राइब कर